Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to see a new chapter that is congruence of triangles. तो पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है, congruent figures क्या होते हैं. ठीक है, तो let's see the definition. Define congruent figures. Figures that have exactly the same shape and the same size are called congruent figures. Okay? और इसका मतलब ये है कि जो फिगर जिसका साइज सेम हो, शेप सेम हो, वो आइडेंटिकल हो, वही कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं. और उसका सिंबल कैसे है कॉन्ग्रुएंस का? कैन यू सी दिस? ये है सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस. अभी एग्जांपल्स देखते हैं. फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या है? बहुत ही इजी है ये. एग्जांपल्स, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स. तो लाइंस भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विल टेक दिस टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी. तो यहाँ पे देखिएगा ए बी एंड सी डी आर द टू लाइन सेगमेंट्स. उनका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर्स ईच. तो ए बी इज 5 सेंटीमीटर, सी डी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स these two lines are congruent to each other. They are very much identical. The size and the shape are same. Exactly same. Okay, so this is line segment, example for line segment. Let us see what are congruent angles. तो यहाँ पे देखिएगा ABC forms an angle that is 30 degrees. तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है 30 degrees. 30 degrees at vertex B. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा PQR एंगल फॉर्म हुआ है Q पे एंड दैट इज ऑल्सो 30 degrees. दैट मीन्स ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्योंकि दोनों के एंगल जो है वो 30 degrees ही हैं. ठीक है, सो इनको कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोला जाता है. Next we'll see other shapes also. For example, we'll see triangles. ये है equilateral triangle. Equilateral triangle यानी क्या है? All the three sides of the triangle are of same AB, BC or AC. If this ABC is a triangle, AB, BC and AC are of same length. For example, AB 3 centimeters है. That means BC is also 3 centimeters and AC is also 3 centimeters. That is why it is called as equilateral triangle. This is ABC is a equilateral triangle. Same as ABC, there is PQR, wherein PQ, QR and PR have the same length, that is 3 centimeters each. PQ is of 3 centimeters, QR is of 3 centimeters and PR is also of 3 centimeters. Therefore, ABC and PQR are congruent triangles. ये जो equilateral triangle है ये congruent to each other है. Okay? क्योंकि इनका length जो है वो same है, shape भी same है. There may be many more examples. For example, identical congruent rectangles, congruent squares, congruent circles. Circles में same अगर radius है दो circles का तो they become congruent. Okay. Now let's see what are the criteria for two triangles to be congruent. Congruency आप लोगों को up to 10th standard use होगा. So better know the basics of this. Two triangles are congruent when the corresponding sides are equal. Yes, the sides of the triangles should be equal. For example, ABC and PQR, which we have seen. इनका size जो है 3 centimeters each है. That is why they are congruent. Next, the corresponding angles are equal. The corresponding angle should also be equal. In case of equilateral triangle, the angles will be 60 degrees. क्योंकि sum of internal angles of a triangle is 180 degrees. अगर साइड सेम रहेंगे तो एंगल्स भी सेम होगा. दैट इज 180 अपॉन 3. दैट इज 60 degrees. नेक्स्ट, द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस मैच एग्जैक्टली विथ ईच अदर. तो वर्टेक्स जो होगा वो भी मैच करेगा, आइडेंटिकल होगा.
कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर 3 pairs of corresponding sides, 3 pairs of corresponding angles and 3 pairs of matching vertices in 2 congruent triangles. तो फर्स्ट है 3 pairs of corresponding sides, second is 3 pairs of corresponding angles and then 3 pairs of matching vertices in 2 congruent triangles. तो ये होने चाहिए. दिस इज द क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज फिफ्थ, we'll learn a new word that CPCTC, which stands for corresponding parts of congruent triangles are congruent or equal. Corresponding parts of congruent triangles are congruent or equal. They will be congruent or equal. So these parts should be equal. For example, sides, angles and vertices. ठीक है, तभी ये congruent होते हैं. Any shape. This is in case of triangles. Okay. Move on to next subtopic, that is conditions for congruence of triangle. जो conditions होते हैं congruence of triangles में वो क्या है? यहाँ पे देखिएगा. First one is SSS criterion for congruence. That means SSS stands for side, side and side. We know that in a triangle there are 3 sides. 3 sides होते हैं एक triangle में. Let us take an example, that is ABC and PQR. तो यहाँ पे देखिएगा AB is 3 centimeters. Okay. Then if AB is 3 centimeters, here QR is also 3 centimeters. Okay. That means one side AB, other side QR are identical or congruent. Next, BC is 4 centimeters. PR is also 4 centimeters. That means these two sides, that is BC side of triangle ABC and PR side of triangle PQR are identical, same. Next बचा है AC. तो AC is same as PQ, that is 7 centimeters each. तो AC is equal to PQ. तो इसमें क्या हो गया कि both the triangles have identical sides. For example, यहाँ पे देखिएगा 3 centimeters है, यहाँ पे 3 centimeters, 4 centimeters, यहाँ पे भी 4 centimeters है, 7 centimeters. So ये भी 7 centimeters. अगर हम लोगों ने इसे टिल्ट किया और AB को बेस बनाया QR पे, तो ये ऐसे ही बैठ जाएगा. ये हो गया congruent. So ABC is congruent to PQR. नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? SSS साइड 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 हो गया. नेक्स्ट वी विल सी SAS. SAS criterion for congruence. SAS stands for side angle side, यानी कि 2 साइड सेम और उनके दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो सेम होना चाहिए. If 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding 2 sides and the included angle of another triangle, then the 2 triangles are congruent by SAS criterion. We'll take an example for this to understand it in a better way. तो यहाँ पे देखिए ABC है, PQR है. तो AB is 3 centimeters, PR is also 3 centimeters, BC is 6 centimeters, QR is 6 centimeters, and in between AB and BC there is a angle formed at B, that is 60 degrees. Or in between PR and QR there is a angle which is formed which is 60 degrees. That means ABC, PRQ, these are exactly identical. Therefore these 2 triangles are congruent. ठीक है, 2 sides हो गए AB and BC, included angle is 60, PR and QR, and included angle is 60. That means 2 sides and 1 angle included. This criterion fulfills, that is SAS criterion. Then these 2 triangles are congruent. ठीक है. For example, here in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle R is equal to 60 degrees. AB is equal to
PR that is 3 centimeters, BC is equal to QR that is 6 centimeters. Angle B and angle R are angles included in the triangles ABC and triangle PQR and also in between the two sides. तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे वर्टेक्स है वहाँ पे फॉर्म हो रहा है ABCK और यहाँ पे PRQ में. That is why it fulfills the criteria of SAS criterion. Also between the sides AB and BC and PR and QR. PR and QR. तो इसकी वजह से ये SAS criterion fulfill होता है. Therefore these two triangles are congruent. This is one of the criterion. Move on to next criterion. What is that? The third criterion is ASA criterion for congruence. ASA or AAS or SAA. So this stands for angle side angle. ASA means angle side angle. Two angles and one side. ABC और PQR. तो यहाँ पे देखिएगा एंगल B is equal to angle Q. Okay. Angle C is equal to angle R. Yes. तो in between BC, angle B and angle C, there is a side BC. Here in between Q and R, there is a side QR. So here BC is also equal to QR. That means two angles are equal. Angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R. And on these two angles, there is a side that is BC and QR. So these two sides are also equal. Therefore, it forms congruent triangles and this here ASA criterion is fulfilled. The two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of another triangle. Then the two triangles are congruent by ASA theorem. ये यहाँ पे congruent कैसे हो गया? AS that is angle side angle, angle side angle. इस क्राइटेरियन को फुलफिल करने के बाद ये दोनों congruent triangles हो जाते हैं. प्रूव करने के लिए पूछा तो you have to write this way. ठीक है. नेक्स्ट तो ASA को फर्दर मॉडिफाई किया तो दो और क्राइटेरियंस हो जाते हैं दैट इज AAS और SAA. वो होता क्या है वो देखते हैं. यहाँ पे देखिएगा सेम ट्राइंगल्स दिए हैं जैसे कि हम लोगों ने ASA में देखा था वैसे. जैसे कि यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंगल R इज इक्वल टू 30 and BC is the included side, RQ is the included side in the other triangle. तो ये दोनों भी 6 सेंटीमीटर्स हैं. Now we will see that ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे 70 है 30 है. Sum of the internal angles of a triangle is what? 180 degrees. तो ये 70 और ये 30 है that means it is 100. 180 minus 100 क्या होगा? 80. अगर ये 80 डिग्रीज है तो यहाँ पे sorry this is 80, this is also 80. That means if this is 80 degrees, when the two angles are equal, in this case two angles of this triangle and two angles of this triangle are equal, congruent to each other, then the third angle should also be equal. Okay, because the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. Let's see. We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Angle A we don't know, but angle B is 70, angle C is 30. 70 plus 30 is 100, that is equal to 180. तो angle A is equal to 180, इसे राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो माइनस होगा. तो एंगल A is equal to 180 minus 100, 80 डिग्रीज. तो ये हो गया 80. सेम वे एंगल P भी 80 डिग्रीज ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी 70 और 30 है. So that means all the angles of this triangles are equal. Therefore, the triangles will be congruent to each other. When the two angles of a triangle are equal to the corresponding angles of the other triangle, then the third angle of both the triangles will also be equal. This यहाँ पे दो angles equal हैं तो third angle should be equal because of the fact that sum of all the sides of a triangle
is equal to 180 degrees. So the ASA criterion can be modified to AAS or SAA criterion provided the corresponding sides of both the triangles are equal. तो उनका sides भी अगर same हो गया तो ये दोनों क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाते हैं, दैट इज AAS और SAA. ठीक है, क्योंकि एंगल्स तो सेम हो, दो एंगल्स अगर सिमिलर सेम है तो थर्ड एंगल इज सेम, तो साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी ऑल्सो इक्वल. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्राइटेरिया. RHS criterion for congruence. RHS stands for right angle hypotenuse side. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. तो यहाँ पे पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे ABC एंड PQR आर द टू ट्राइंगल्स विच आर राइट एंगल्ड एट एंगल B एंड एंगल Q. यहाँ पे दोनों ही 90 डिग्रीज हैं. Now let's see the hypotenuse, because hypotenuse भी है यहाँ पे included, right angled hypotenuse side, that means hypotenuse should also be equal. तो AC is 5 centimeters, here PR is also 5 centimeters. One side right angle hypotenuse and one side that is BC and QR. तो यहाँ पे hypotenuse same है, right angle भी है, और एक side है जो base BC and QR, they are also same, that is 3 centimeters each. Therefore, these two become congruent to each other. If the hypotenuse and one other side of a right angled triangle are equal to the corresponding hypotenuse and side of another right angled triangle, then the two triangles are congruent by RHS criterion. यानी कि एक hypotenuse right angled triangle, यहाँ पे right angle होना चाहिए, that is 90 degrees, और एक side हाइपोटेन्यूज सेम, दोनों ट्राइंगल्स के 90 डिग्रीज है यहाँ पे B और Q पे, एंड BC एंड QR आर 3 सेंटीमीटर्स ईच. देन ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR बाय RHS क्राइटेरियन. In triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q, that is 90 degrees. Angle B is equal to angle Q, 90 degrees. BC is equal to QR, which is 3 centimeters. AC is equal to PR, that is hypotenuse, that is 5 centimeters. Then the triangle ABC and triangle PQR are congruent by RHS criterion. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स खत्म होता है. थैंक यू सो मच.